हेलो एवरीवन। आज वीडियो आम ओपीएससी प्रिलिम्स रिविजन सेशन। आम जानते ओपीएससी प्रिलिम्स एग्जाम डेट अनाउंस हो सारा और अक्टोबर 27 तारिख में कंडक्ट होगा जाऊँगी। तो आम पाखे मात्र 90 दिन समय रहा। तो एति भितर आम कौन करवा ना मैक्सिमम रिविजन करवा और एमसीक्यू सॉल्व करवा जहाँफल आम टार्गेट कर चलवा एथर ओपीएससी प्रिलिम्स को क्लीयर करने। तो बर्तमान आज मोर सेशन रे मु रिविजन सीरीज रो पॉलिटी रो किछि टॉपिक डिस्कशन करबी जोडा करंट अफेयर माने न्यूज रे थिला आ ता सहित मु स्टैटिक को रिलेट कर चलबी जा फल रे हमर करंट अफेयर आ हमर स्टैटिक दीटा जाक रिवीजन हे चलियो आ एग्जाम रे हमर को प्रकार क्वेश्चन फ्रेम हे परियो ता विषय रे हम मत क्लास रो शेष रे देखिबा। तो आपण माने जो चैनल रे मो चैनल रे नुआ अटंती ताले चैनल को सब्सक्राइब कर नियंतु, वीडियो को लाइक कर नियंतु एवं आपण संग मानक सहित शेयर कर नियंतु एवं मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर करि चलंतु। बर्तमान स्टार्ट करे आज हमर वीडियो। आज हमर टॉपिक अछि पॉलिटी रो करंट अफेयर देखिबा। लास्ट 1 ईयर मध्ये जो सब न्यूज़ गुडा को करंट रे थिला ताको हम डिस्कशन करबा ता सहित कोन स्टैटिक फैक्ट रिलेटेड अछि एग्जाम रे केमिति क्वेश्चन फ्रेम हो से विषय रे डिस्कशन करबा। बर्तमान देखो तो आज आमर फर्स्ट टॉपिक है सोशलिस्ट सेक्युलर इन प्रियम्बल। प्रियम्बल चैप्टर एटा आमर न्यूज़ रे थिला काहे न्यूज़ रे थिला ना आमर रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट हैज लिस्टेड द ए पिटिशन व्हिच सीक्स द रिमूवल ऑफ द वर्ड सोशलिस्ट एंड सेक्युलर फ्रॉम द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट रे गोटे पिटिशन फाइल हेतिला जो थरे लेखा थिला कोन पिटिशन थिला ना आमर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रो जो प्रियम्बल अछि प्रियम्बल रो सोशलिस्ट और सेक्युलर वर्ड को हटेबा पई सेथिरे थिला। तो वर्तमान आम देखिबा सोशलिस्ट कोन सेक्युलर कोन एगुडा को केबे हमरो एड हेतिला प्रियम्बल ए सब विषय रे हम डिटेल देखिनेबा। फर्स्ट देखिबा हमरो आर्गुमेंट कोन अछि पिटिशन रो आर्गुमेंट अछि जे द वर्ड वेर नेवर इंटेंडेड टू बी इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड दैट सच इंसर्शन इज बियॉन्ड द अमेंडिंग पावर ऑफ द पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 378। तो से कौन कौन ना ये वर्ड जाक केवल आम कॉन्स्टिट्यूशन रो इंटेंट नथिला आर जो इंसर्टेशन डा आमर एमेंडिंग पावर जो अछि पार्लियामेंट रो आर्टिकल 360 अनुसार तार परिसीमा बहिर्भुक्त बोली कहला। द मूव वाज पर से इलीगल फॉर वायोलेटिंग द कांसेप्ट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन enumerating in the article 19(1)(a) of the constitution and the right to freedom of the religion guaranteed under article 25 of the constitution। तो से पिटिशन कहउछि जे हमर ए जो वर्ड दीटा कोन करछि हमर फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन को वायोलेट करछि जोडा हमर कॉन्स्टिट्यूशन रा आर्टिकल 19(1) रो सब क्लॉज ए रो अछि और एटा फ्रीडम ऑफ रिलीजन को मध्य वायोलेट करछि जोडा हमर आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रे अछि। ए वर्तमान देखिबा ए जो दीटा वर्ड रो मीनिंग कोन। फर्स्ट देखिबा हमर सोशलिस्ट और सेक्युलर वर्ड रो मीनिंग कोन। ए जो दीटा वर्ड देला सोशलिस्ट और सेक्युलर ए दीटा जाका हमर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रो प्रियम्बल रे हमर 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 रे दीटा इंसर्ट हेतिला। बिफोर द टर्म सोशलिस्ट वाज एडेड इन द प्रियम्बल सम ऑफ द DPSP इन द कॉन्स्टिट्यूशन हैड सोशलिस्ट कांस्टेंट। तो आमर ये तो 1976 रे अमेंडमेंट 46 अमेंडमेंट अनुसार एड हेतिला किंतु ता आगुरु आमर किछि सोशलिस्ट कंटेस्ट कोर्ट थिला ना आमर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रे थिला। वर्तमान देखिबा सोशलिस्ट कोन। सोशलिस्ट टर्म रो अर्थ होला वेल्थ शुड बी शेयर्ड इक्वली बाय द सोसाइटी माने आमर सोसाइटी रे धन संपत्ति को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करबा। वेल्थ शुड नॉट बी कंसंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ ए फ्यू रिच पीपुल हमर धन संपत्ति गुडा कोन अल्प धनी श्रेणी लोक मानक हाथ रे न रहू ता सेडा कोन होची इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाऊ आर अर्थ। द गवर्नमेंट शुड बी रेस्पोंसिबल फॉर रिड्यूसिंग सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज आ गवर्नमेंट होची रेस्पोंसिबल जे सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को रिड्यूस करबा पई। नेक्स्ट देखिबा सेक्युलर अर्थ कोन। ये तो गला सोशलिस्ट अर्थ। सेक्युलर अर्थ होची secular means that the relationship between the government and the religious group are determined according to the constitution and law. It separates the power of state and religion. It means that all religion are equally respected and that there is no state religion. All the citizens of India are allowed to process, practice and propagate their religions. तो secular अर्थ कोन ना हमरो रिलीजियन और स्टेट रो सेपरेशन टा होचे हमर सेक्युलर माने
एठी हमर समस्त रिलीजन को समान अधिकार मिली आ इंडिया रो जेकोसी सिटीजन ता निज इच्छा अनुसार से कौन कर कौन रिलीजन को मध्य ग्रहण कर तो ये है हमर सेक्युलर रो अर्थ हमर 42 नंबर एमेंडमेंट एक्ट रे सेक्युलर आ सोशलिस्ट ऐड करा जायछि आ छडा आउ किछि मध्य ऐड करा जायछि जोडा हमर यूनिटी ऑफ द नेशन थिला ताको हमर चेंज कर दिया जाय कि यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन कर दिया जायथिला तो एठी हमर इंपोर्टेंट पॉइंट कोन कोन देखिले ना फास्ट हमें देखिबा जे यूनिट सोशलिस्ट आ सेक्युलर वर्डटा हमर को एमेंडमेंट एक्ट रे कॉन्स्टिट्यूशन रे ऐड हेतिला तो आंसर होची 42nd एमेंडमेंट एक्ट 1976 आ कोन देखिबा ना 42 एमेंडमेंट एक्ट रे को वर्ड को ऐड करा जायथिला सोशलिस्ट सेक्युलर सेमति इंटीग्रिटी मध्ये एठी ऐड करा जायथिला आ सोशलिस्ट रो डेफिनेशन आ सेक्युलर रो डेफिनेशन कोन एति हमर इंपोर्टेंट पॉइंट अछि ए टॉपिक रु जानिया पई नेक्स्ट आसिला हमर बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन हमर जो केशवानंद भारती केस अछि सेटा हमर न्यूज रे थिला काई न्यूज रे थिला ना रिसेंटली हमर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया condemned the Supreme Court's landmark 1973 judgment in the Keswananda Bharati case, in which it ruled the Parliament had the authority to amend the Constitution, but not its basic structure. तो एठी हमर बेसिकली हम देखिबा बेसिक स्ट्रक्चर कोन ए बेसिक स्ट्रक्चर ता हम एटा एग्जाम भाई इंपोर्टेंट रहइबो फॉर देखिबा बेसिक स्ट्रक्चर कोन व्हाट इज बेसिक स्ट्रक्चर ना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रे किछि मध्ये डिफाइन करा जायनि जे बेसिक स्ट्रक्चर कोन किछि भी कोनोसे आर्टिकल रे मेंशन नै जिबा कोठी भी मेंशन नै नि जे बेसिक स्ट्रक्चर ता कोन द टर्म हैज बीन डिफाइंड टू इंक्लूड फीचर्स लाइक बेसिक स्ट्रक्चर रे कोन कोन जाउछ देखंतु ना सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रूल ऑफ लॉ इंडिपेंडेंट जुडिशियरी फेडरलिज्म सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक वेलफेयर स्टेट पार्लियामेंटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट आ प्रिंसिपल ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शन ए सब गुडा का हमर बेसिक स्ट्रक्चर रे जाउछि तो फास्ट देखिबा केशवानंद भारती किए जहाँ पे हमर ये जो केशवानंद भारती केस हेतिला तांको विषय रे किछि देखिनेबा केशवानंद भारती होचंदी आदि शंकराचार्य ट्रेडिशन रो जणे मंक बा साधु संत जे कि 1940 रे जन्म होइथिले केशवानंद भारती सन्यासी नेले केते वर्ष बयस रे ना 19 वर्ष बयस रे सन्यासी नेले आ हमर एडनिर मठ अछि जोडा हिंदू मोनास्ट्री पई केरला रे अछि तार से हेड हेले 1961 मसिया रे से अपॉइंट हेले जे मठर हेड हिसाब रे अपॉइंट हेले आ तांकर डेथ हेइतिला केबे ना 2020 रे डेथ हेइतिला और से पर्यंत से तार हेड हेगिथिले से केरला गवर्नमेंट रो लैंड रिफॉर्म को एग्नेस्ट करथिले और से चैलेंज करथिले जे 1969 रो लैंड रिफॉर्म एनेक्टेड बाय कम्युनिस्ट सी अच्युत मेनन गवर्नमेंट व्हिच इज अफेक्टेड हिज मठ तो ए अच्युत गवर्नमेंट मेनन गवर्नमेंट रो जो लैंड रिफॉर्म एक्ट आस्तिला 1969 रे से तांगर मठ को इफेक्ट करथिला तेनु से ता विरोध रे सुप्रीम कोर्ट रे केस फाइल करथिले अंडर दिस रिफॉर्म एंड्यूर मठ लॉस्ट द लार्ज चंक ऑफ इट्स प्रॉपर्टी व्हिच कंट्रीब्यूटेड टू इट्स फाइनेंशियल लॉ केशवानंद भारत आर्ग्यूड हिज एक्शन this action has violated the fundamental right in particular his fundamental right religion article 25 freedom of religion domination article 26 ଆଉ right to property article 31 तो केशवानंद भारती कोन केस फाइल करथिले ना तांकर फंडामेंटल राइट से माने से इफेक्ट करछि जोडा हमर आर्टिकल 25 26 और 31 तो एडी इंपोर्टेंट रहइबो केशवानंद भारत सहित हमर को आर्टिकल जडित होई गछि आर्टिकल 25 जोडा राइट टू रिलीजन आर्टिकल 26 राइट टू रिलीजियस डिनोमिनेशन और आर्टिकल 31 राइट टू प्रॉपर्टी एटा आउट अछि जे हम एडनिर मठ कथा देखले एडनिर मठ इज बिलीव्ड टू हैव बीन एस्टैब्लिश्ड बाय टोटाकाचार्य इट इज one of 4 original disciples of आदि शंकराचार्य तो नेक्स्ट पॉइंट हम देखिबा गिल्टी बाय एसोसिएशन डॉक्ट्रिन कोन एटा हमर न्यूज रे कंबाइन थिला ना सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ओवरटर्न्ड इट्स 2011 जजमेंट reinstalling the guilty by association doctrine. It ruled that being a member of a banned organization would be a crime under the country's anti-terror law, the Unlawful Activities Prevention Act 1976. तो सुप्रीम कोर्ट रिसेंटली कोन करचंदी ना तांगर 2011 रे गोटे जजमेंट थिला से ताकू रीइंस्टॉलिंग करचंदी जोडा होची गिल्टी बाय एसोसिएशन डॉक्ट्रिन असि कोन कहले ना a member of banned organization would be crime under the country's anti-terror law, Unlawful Activities Act
1967 ଅନୁଯାୟୀ। ଫର୍ଥ ଦେଖିବା ଆମେ ଗିଲ୍ଟି ବାଇ ଆସୋସିଏସନର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଗିଲ୍ଟି ବାଇ ଆସୋସିଏସନ is also known as the association of fallacy, is officially defined as guilt ascribed to someone not because of any evidence but because of their association with an offender. ତାକୁ ଆମେ କହିବା guilt by association. In this particular context, an individual can face criticism or backlash as a result of their likeliness to existing group or entity. Conversely, honor by association describes a situation where someone is lauded as a result of their affiliation with groups that are perceived in a positive light. Next is doctrine of pleasure କ'ଣ? The Kerala has been debated over using the doctrine of pleasure for the appointment and dismissal of vice chancellor of universities by governor of the state as chancellor of all the state universities. A doctrine of pleasure କ'ଣ? The pleasure doctrine is concept derived from English common law. तो ए जो doctrine ना हमर derive ହେଇଛି English common law रू, under which the crown can dispense with the services of anyone in its employ at any time. एथरे कोन ए जो इंग्लिश कॉमन लॉ रे कोन अछि ना हमर जो क्राउन जे हेड अछि सी एट कोनोसी टाइम रे मध्ये कोन करि परिबो डिस्पेंस करि परिबो सर्विस रु कोनोसी लोक को जो माने कि तार एम्प्लॉय अंडर अछि कोनोसी समय रे मध्ये. इंग्लैंड रे द मोरल रूल इज दैट ए सिविल सर्वेंट ऑफ ए क्राउन होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द क्राउन. इंग्लैंड रे प्रथाला प्रचलित गोटे सिविल सर्वेंट ऑफ द क्राउन होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द क्राउन अर्थ तांको इच्छा रे से जेबे मध्ये चाहिबे तांको बाहर कर देई परिबे. दिस मीन्स हिज सर्विस कैन बी टर्मिनेटेड एट एनी टाइम बाय द क्राउन विदाउट असाइनिंग एनी रीजन. वर्तमान देखिए हमर इंडिया रे कोन प्रोविजन अछि? इंडिया रे कोन प्रोविजन अछि ना अपॉइंटमेंट पई और डिसमिसल ऑफ सिविल सर्वेंट मानक पई कोन प्रोविजन अछि देखिबा. इन इंडिया आर्टिकल 310 of the constitution says every person in the defense or civil service of the union holds office during pleasure of president, and every member of the civil service in states holding office during pleasure of governor. तो इंडिया रे हमर कोन रूल अछि ना आर्टिकल 310 अनुसार जदि कोनसे लोक डिफेंस बा सिविल सर्विस रो अंतर्गत अछि से कार प्लेजर रे ऑफिस होल्ड करिवो ना प्रेसिडेंट को प्लेजर रे आ स्टेट रे सेटा गवर्नर को प्लेजर रे से माने पोस्ट डाकू होल्ड करि रहइबो. हाउएवर आर्टिकल 311 imposes restrictions on the removal of civil servants. It provides of civil servants being given a reasonable opportunity for a hiring on the charges against them. There is also a provision to dispense with the inquiry if it is not practicable to hold one or if it is not expedient to do so in the interest of national security. In practical terms, pleasure of president referred to here is that the union government and governor's pleasure is that the state government. तो हमर इंडिया रे कोन अछि आर्टिकल 310 कहला जे हमर सेंटर रो कोनोसी लोक कोनोसी डिफेंस बा सिविल सर्विस रे पर्सन प्रेसिडेंट को प्लेजर रे अपॉइंट हबो आ स्टेट रो गवर्नर को प्लेजर रे अपॉइंट हबो. किंतु आर्टिकल 311 गोटे रेस्ट्रिक्शन देला जे हमर रिमूवल प्रेसिडेंट बा गवर्नर रो प्लेजर रे हे परिबोनी जेमति हमर कोडी होची हमर इंग्लैंड रे होची. तो आ पे गोटे जदी कोनोसी सिविल सर्वेंट हमर नेशनल सिक्युरिटी रो इंटरेस्ट बा खतरा आसिला तो ता पे गोटे इंक्वायरी कमिटी बैठा जिवो. से कमिटी रो रेकमेंड अनुसार ताको बाहर कर दे दिबो किंतु डायरेक्ट प्रेसिडेंट बा गवर्नर चाहिले ताको डायरेक्ट हटै परिबेनी. नेक्स्ट हला डज गवर्नर हैव द पावर टू यूज दिस डॉक्ट्रिन. गवर्नर को पावर अछि कि डॉक्ट्रिन यूज करबा पई ना आर्टिकल 164 द चीफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय गवर्नर and the other ministers are appointed by governor on CM's advice. It adds that a minister hold office during the pleasure of governor. हमर आर्टिकल 164 अनुसार मिनिस्टर को अपॉइंट होचंदी गवर्नर को द्वारा और अदर मिनिस्टर्स अपॉइंट होचंदी गवर्नर को द्वारा का एडवाइस रे ना सीएम को एडवाइस रे. एटा कोन कहला द मिनिस्टर माने ऑफिस होल्ड करचंदी का प्लेजर रे गवर्नर को प्लेजर रे ऑफिस को होल्ड करचंदी.
in a constitutional sense in which they are appointed solely on the CM's advice. The pleasure referred to is also taken to mean that the right of chief minister to dismissal a minister and not that of the governor. In short, the governor of India state can't remove a minister on his own. तो आमे देखिले जे सीएम कर एडवाइस द्वारा गोटे मिनिस्टर कौन होचंदी अपॉइंट होचंदी किंतु the right of chief minister to dismiss a minister and not that of the governor किंतु तांको dismiss गोटे मिनिस्टर को dismiss करिवार राइट का हाथ रे अछि ना चीफ मिनिस्टर हाथ रे अछि गवर्नर हाथ रे नै तेनु आमे शॉर्ट रे कहबा जे गवर्नर ऑफ द स्टेट को हाथ रे मिनिस्टर को रिमूवल करिवार रिमूव ए मिनिस्टर ऑन हिज ओन तांको इच्छा अनुसार से कोनोसी मिनिस्टर को मध्य रिमूव करि परिबेनी नेक्स्ट आसिला डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी कोन The Competition Commission of India CCI invoked the doctrine of necessity to bypass the quorum to clear 6 deals. बर्तमान देखिए doctrine of necessity कौन? The term doctrine of necessity is a term used to describe the basis on which administrative actions by administrative authority which are designed to restore order are found to be constitutional. It is an expression to principle of nemo judex in causa sua. The maxima on which the doctrine is based originated in the writings of the medieval jurist Harry D. Barton, and similar justification for the kind of administrative action have been advanced by more recent legal authorities including William Blackstone. तो बर्तमान देखिए हमर अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऊपर हम कोन कोन सब करंट रे न्यूज़ थिला कॉन्स्टिट्यूशन रो शेड्यूल ट्राइब ऑर्डर 5th अमेंडमेंट बिल 2022 न्यूज़ रे थिला कोन पय एटा न्यूज़ रे थिला देखिबा राज्यसभा पास कला कॉन्स्टिट्यूशन रो शेड्यूल ट्राइब ऑर्डर बा 5th अमेंडमेंट बिल 2022 टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल ट्राइब ऑर्डर 1950 for inclusion of certain communities in list of scheduled tribe in छत्तीसगढ़ तो छत्तीसगढ़ रो केतरा ट्राइब को इंक्लूड करिया पई राज्यसभा गोटे बिल पास करची जोडा होची हमरो कॉन्स्टिट्यूशन रो शेड्यूल ट्राइब ऑर्डर 5th अमेंडमेंट बिल 2022 द केस्ट्स जो एथरे हमरो इंक्लूड करिया कथा को गला छत्तीसगढ़ रो से केस्ट गुडा को होची धनुहार धनुआर किसान सुआंड्रा सोनरा आउ बिनिहिजा कम्युनिटी ये सब एडेड हेबो लिस्ट रे द 3 देवनागरी वर्जन ऑफ पांडो कम्युनिटी आर आल्सो इंक्लूडेड फॉर देखिए हमरो प्रोसीजर कोन अछि ना गोटे कम्युनिटी को इंक्लूड करिया पई सेंट्रल लिस्ट रे नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास एक्ट 1993 अछि हमरो आ अनुसार एनसीबीसी एक्ट 1993 अनुसार कमीशन इज मैंडेटेड टू कॉन्स्टिट्यूट ए बेंच to examine the proposal of inclusion and then forward their decision to union government with dissent where applicable. The cabinet then needs to approve the auditions and bring legislation to this effect. The president is empowered to notify the changes. तो हमरो एनसीबीसी एक्ट 1993 कोन कहूची ना गोटे हमरो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच तयारी करा जिवो से कॉन्स्टिट्यूशन बेंच एग्जामिन करिवो तार प्रपोजल को इंक्लूड करिवो ना नहीं तार डिसीजन को से फॉरवर्ड करिवो का पाखु ना यूनियन गवर्नमेंट पाखु फॉरवर्ड करिवो यूनियन गवर्नमेंट कोन करिवो ताको अप्रूवल दबो लेजिस्लेशन रे ताको इफेक्ट करिवो आ प्रेसिडेंट ताको नोटिफाई करिवे किंतु हमर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन कोन कहूची देखिबा हमर आर्टिकल 15 रो 4 आ 16 रो सबक्लॉज 4 मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर सोशली and educationally backward classes citizens SCBC popularly known as OBC the scheduled caste SC and scheduled tribe ST the constitution ro 102 amendment act 2018 grant kala constitutional status of national commission of backward castes NCBC तो हमरो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन अछि आर्टिकल 15/4 रे आर्टिकल 16/4 रे ना हमरो ओबीसी एससी और एसटी विषय रे तार प्रोविजनल अछि सेमति हमरो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 102 रो एक्ट जोडा 2018 मसे रे आस्तिला से कोन कला ना एनसीबीसी को कॉन्स्टिट्यूशनल रो स्टेटस रो मान्यता मिलला सेटे एनसीबीसी को इट फर्दर इंसर्टेड
कौन कौन इंसर्ट है ना आर्टिकल 338 रो बी इंसर्ट है व्हिच डील्स विथ द स्ट्रक्चर ड्यूटी एंड पावर ऑफ एनसीबीसी तो एनसीबीसी हमरो को अमेंडमेंट रे आसिला 102 अमेंडमेंट आसिला 2018 मसिया रे आसिला आ सेथरे हमरो इंक्लूड हैला आर्टिकल 338 बी जोठिरे कि लिखा अछि एनसीबीसी रो स्ट्रक्चर कोन तार ड्यूटी कोन आ तार पावर कोन रोल ऑफ एनसीबीसी कोन it was tasked with monitoring safeguard provided for socially and educational backward classes giving advice to their socio-economic development inquiring into complaint and making recommendations among their functions सेमते आर्टिकल 342 रो ए एड हैला जोटा डील करियो पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू नोटिफाई ए पर्टिकुलर केस एज एन एससीबीसी एंड द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू चेंज द लिस्ट देखिए सुप्रीम कोर्ट रो कोन ऑब्जर्वेशन अछि गोटा आसला मराठा रिजर्वेशन केस रे सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट ओनली द सेंटर हैड द पावर टू ड्रॉ अप द ओबीसी लिस्ट एज पर द अबव इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 102 अमेंडमेंट एक्ट आर्टिकल 342 ओनली मेंशंस द प्रेसिडेंट एंड पार्लियामेंट विथ नो रेफरेंस टू स्टेट तो हमरो मराठा रिजर्वेशन केस रे सुप्रीम कोर्ट कोन कहला ना हमरो ओबीसी लिस्ट को ओनली किए करि परिबो ना सेंटर रो पावर अछि जे कि ओबीसी लिस्ट प्रिपेयर करिवो एज पर द अबव इंटरप्रिटेशन कॉन्स्टिट्यूशन रो 102 अमेंडमेंट एक्ट रे जो आर्टिकल 342 ए इंक्लूड होला एथरे ओनली मेंशन करा जाय छि द प्रेसिडेंट आ पार्लियामेंट विथ नो रेफरेंस टू स्टेट एथरे स्टेट रो किछि मध्ये रेफरेंस दिया जायनी टू रिजर्व द verdict and the restore of the power of the state government to maintain the state list OBC's parliament pass 127th constitution amendment bill 2021 तो स्टेट को कोन करबा पई स्टेट को और स्टेट रो ओबीसी लिस्ट को मेंटेन करबा पई हमरो 127 नंबर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल 2021 रे आसिला अमेंडमेंट इन द आर्टिकल 366 रो 26 सी क्लॉज और 388 बी रो 9 क्लॉज after which state will able to direct notify OBC and SCBC without having referred to NCBC and the state list was being taken out of the domain of the president and will notify by the assembly आ एथरे दीटा हमरो क्लॉज को अमेंड करा गला ओटा आर्टिकल 366 रो सेथरे ऐड करा गला 26 रो सी क्लॉज को आ आर्टिकल 338 बी रे ऐड करा गला 9 नंबर क्लॉज को नेक्स्ट आसला कॉन्स्टिट्यूशन रो 105th अमेंडमेंट एक्ट 2021 हमरो 105 नंबर अमेंडमेंट एक्ट आसला 2021 रे जोडा फोकस कला ऑन रिस्टोरिंग द अथॉरिटी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू आइडेंटिफाई ओबीसी दैट आर सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड हम वर्तमान देखिथिले तार बिल आस्तिला तो एटा 105 नंबर अमेंडमेंट रे एक्ट रे परिणत होला 2021 मसिया रे आ ए एक्ट कोन गला ना स्टेट गवर्नमेंट आइडेंटिफाई करिवो काको ना ओबीसी श्रेणी को आइडेंटिफाई करिवो 105 नंबर अमेंडमेंट एक्ट वाज बॉट थ्रू द 127th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल तो एटा हमर एग्जाम रे फ्रेम हे परची से मैच ऑफ द फॉलोइंग रे पचा दोची को एक्ट डा को बिल रे आस्तिला तो हमें आको मन रखियो पड़ियो ना 105 अमेंडमेंट एक्ट डा आस्तिला 127 नंबर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल रे द कॉन्स्टिट्यूशन रो 105th अमेंडमेंट एक्ट 2021 often known as the 1/5 constitutional amendment to Indian constitution restored the authority of state government to recognize socially educationally and backward classes तो हमरो ए 105 नंबर अमेंडमेंट एक्ट रे स्टेट गवर्नमेंट रो सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस को रिकॉग्नाइज करबा कथा कुआ गला communities of which the state in India may give special provision or affirmative action are classified to SCBC which includes the category generally referred to other backward classes अरे देखो किसी अमेंडमेंट आर्टिकल कथा कुआ जायछि ना 102 अमेंडमेंट रे इंसर्ट करा गला 338 रो बी और 342 रो ए को 338 रो बी रे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल जिका को ना एनसीबीसी को 342 ए गिव द सेंट्रल गवर्नमेंट टू पावर द मेंटेन ओबीसी लिस्ट किंतु हमरो 105 नंबर अमेंडमेंट बिल रे इंसर्ट हैला केते आर्टिकल 366 रो 26 रो सी क्लॉज एड हैला जोडा डिफाइन कला सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस एससीबीसी तो हमरो सेंटर रे रहला कोन अदर बैकवर्ड क्लासेस ओबीसी जोडा सेंट्रल गवर्नमेंट डील करूची हमरो सोशली एंड इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लासेस एससीबीसी जोडा हमरो स्टेट डील करूची नेक्स्ट आसला
constitutionality of the first amendment act 1951 ଆମର जो प्रथम amendment act आसला 1951 रे तार constitutionality विषय रे करंट अफेयर रे न्यूज रे थिला ना रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट कोन गला एग्री हैला टू व्यू a plea challenging the constitutionality of first amendment 1951 which had put the reasonable restrictions under clause 2 of article 19A of freedom of speech and expression हमरो जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आसला 1951 रे तार जो रेस्ट्रिक्शन थिला क्लॉज 2 रे आर्टिकल 19A ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन रे तो तार कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को व्यू करबा पई सुप्रीम कोर्ट रिसेंटली राजी हेची तो एर रीजन बिहाइंड अमेंडमेंट ए अमेंडमेंट काहे आसला टू रिमूव certain practical difficulties created by the court's decision in several cases such as Kameswara Singh case, Romesh Thapar case, etc. Issue involved in the cases included freedom of speech, accusation of zamindari land, state monopoly of trade, etc. तो ए सब कारण पई हमरो ए अमेंडमेंट रो रीजन अमेंडमेंट हेतिला तो फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1901 रे कोन थिला empowered the state to make special provisions of the advancement of socially economical backward classes, provide for saving of laws, providing for acquisition and estate. एथरे ऐड करा जायथिला 9th शेड्यूल को जो 9th शेड्यूल प्रोटेक्ट करछि द लैंड रिफॉर्म एंड अदर लॉ इंक्लूडेड इट्स फॉर्म जुडिशियल रिव्यू आफ्टर आर्टिकल 31 रे 31B ए सब इंसर्टेड हेथिले ए अमेंडमेंट बळरे एडेड 3 मोर ग्राउंड्स फॉर रेस्ट्रिक्शन ऑन फ्रीडम ऑफ स्पीच ऐड करा जायथिला स्पीच एंड एक्सप्रेशन को पब्लिक ऑर्डर फ्रेंडली रिलेशन विथ फॉरेन स्टेट एंड इनसाइटमेंट टू द ऑफेंस ए सब मध्य इंक्लूड करा जायथिला provided that state trading and nationalization of any trade or business by the state is not to be invalid on the ground of violation of the right to trade or business. वर्तमान देखिए अमेंडमेंट इन रेस्पॉन्स टू इश्यू अगेंस्ट फ्रीडम ऑफ स्पीच रे कोन अछि हमर अमेंडमेंट इंक्लूड हेतिला क्लॉज 2 अंडर आर्टिकल 19 रे ये कोन डील करथुला deals with reasonable restriction on the freedom of speech and expressing granted under article 19(1) ro subclause A. The citizen's right to practice any profession to or to carry any occupation, trade or business conferred by article 19(1) ro subclause G, subject to reasonable restrictions which the law of the state may impose in the interest of the general public. बर्तमान आमर देखिए इंपोर्टेंट कौन कौन सब अमेंडमेंट रिसेंट घटिला जिमने आमर 102 अमेंडमेंट एक्ट आस्तिला केबे 2018 मसिया रे एथरे आमर आर मेन कौन अछि एथरे कराला ना एनसीबीसी को आमर कॉन्स्टिट्यूशनल रो स्टेटस मिलला जोथरे आमर आर्टिकल 338 बी और 342 ए को ऐड कर दिया गला सेमते आमर 103 नंबर अमेंडमेंट एक्ट 2019 रे आस्तिला जोडा आमर ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन पई इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन रे हमर रिजर्वेशन पई आस्तिला आउडा हमर को आर्टिकल को डील करछि ना आर्टिकल 15 और 16 को डील करछि सेमने हमर 104 नंबर अमेंडमेंट एक्ट 2020 रे आस्तिला जोथरे हमर आर्टिकल 334 आउ 34 को एक्सटेंड कर दिया गला नेक्स्ट आसला राइट टू प्रिजनर कौन देखिबा ए मुंबई सेशन कोर्ट started that searching under trial prisoners by stripping them violates their fundamental rights privacy and considered humiliating पर देखिबा प्रेजेंट सिचुएशन कौन अछि प्रिजन्स इज ए स्टेट सब्जेक्ट जोडा हमर स्टेट लिस्ट रो अंतर्गत आ हमर 7th शेड्यूल रे अछि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रो The management and administration of prisons falls exclusively in the domain of state government. It is governed by Prisoners Act 1894 अनुसार ये गवर्न होची and the prisons manual of the respective state government. तो prison होची गोटे state subject ये purely state को belong करची center सहित आर किछि संबंध नाही. State have the primary role, responsibility and authority to change the current prisons law, rule and regulations.
बर्तमान देखिए व्हाट आर द राइट्स ऑफ प्रिजनर प्रिजनर मानक राइट कौन कौन अछि वेरियस फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 14 19 20 21 and 22 of constitution of India deals with the right to prisoners आर्टिकल 14 कौन कहला ना आर्टिकल 14 कहला right to equality which provides equally before law and equal protection of law of all persons आर्टिकल 20 कौन डील कला ना with two things firstly it prohibits double jeopardy means no person should be convicted for same offense twice गोटे offense पाई कोनोसे मध्ये पर्सन दी थर दंड भोगिबनी secondly ये प्रोहिबिट कला कोन सेल्फ इंक्रिमिनेशन that is no one can compiled to be witness against himself निज सपक्ष रे निजे के भी मध्ये विटनेस हे परिबनी सेमते आर्टिकल 21 डील कला राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी आर्टिकल 22 कोन डील करछि ए पर्सन must be produced before magistrate within 24 hours of his arrest and must provided with a counsel of his own choice वर्तमान देखिबा हमर ए जो कमिटी प्रिजन रिफॉर्म पई को कमिटी एसोसिएटेड अछंदी हमर एथरे ओपीएससी रो गोटे फ्रेम होची क्वेश्चन कमिटी विषय रे तो हमर प्रिजन रिलेटेड कमिटी की अछि जस्टिस अमिताभ राय कमिटी अछि मुल्ला कमिटी अछि आ कृष्णा आयर कमिटी ए तीनटा कमिटी रिलेट का सहित अछि ना हमर प्रिजन सहित अछि रिलेटेड नेक्स्ट है राइट ऑफ चिल्ड्रेन कथा देखिबा द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया guarantees equality before the law to all citizens and pledges special protections for children in reality millions of children are being deprived of their fundamental rights due to prevalence of child labor फर्स्ट देखिबा हमर पॉलिसी कोन कोन अछि एग्नेस्ट चाइल्ड लेबर ऑफ इंडिया एग्नेस्ट रे कोन कोन पॉलिसी अछि हमर गोटे पॉलिसी अछि चाइल्ड लेबर एक्ट प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन 1986 ये कोन प्रोहिबिट करछि ना बिलो 14 ईयर एज रो पिला मानकू वर्किंग इन हाजार्डियस इंडस्ट्री प्रोसेस रे काम करबा मना अछि सेमते हमर अछि चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2016 तो आको अमेंड करा जायतिला 2016 रे ये कोन कहला ना बिलो 14 वर्ष रो पिला मानकू in all employment and with the provision for the prohibition of the employment adults at 14 ରୁ 18 years in scheduled hazardous companies and processes सेमते हमर एटा 2017 रे पुनी अमेंड हेतिला द चाइल्ड लेबर अमेंडमेंट रूल 2017 आस्तिला ना ए रूल ले कोन गला ना द रूल प्रोवाइड ए ब्रॉड एंड स्पेसिफिक फ्रेमवर्क फॉर प्रिवेंशन प्रोहिबिशन रीयूज एंड रिहैबिलिटेशन ऑफ द चाइल्ड एंड एडल्ट्स एंड वर्कर्स ILO रो कन्वेंशन नंबर 138 कोन प्रोवाइड करछि that the minimum age for admission to the employment shall not be less than the age of completion of compulsory schooling ILO's adoption convention number 182 in 1999 condolences the global consensus of child labor eliminations वर्तमान देखिबा हमर लेटेस्ट डेवलपमेंट कोन अछि the registration of birth and death amendment bill आस्तिला 2023 was recently introduced in Lok Sabha. It amends the Registration of Birth and Death Act 1969. The act provides for the regulation for registration of birth and death. वर्तमान देखिबा हमर कॉन्स्टिट्यूशन रे कोन प्रोविजन अछि चाइल्ड अपलिफ्टमेंट पई कॉन्स्टिट्यूशन रे हमर गोटे आर्टिकल अछि आर्टिकल 21 रो ए जोडा हमर राइट टू एजुकेशन द स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन एज अब 6 रु 14 ईयर तो एक हमर आर्टिकल कोन कहूची ना 6 रु 14 वर्ष रो पिला मानक पई फ्री आ कंपल्सरी एजुकेशन देबा बाध्यतामूलक आर्टिकल 24 कहला प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज पिला मानकर फैक्ट्री रे एम्प्लॉयमेंट को प्रोहिबिशन करछि के ना आर्टिकल 24 सेमने हमर आर्टिकल 39 रे कोन लेखा अछि ना द स्टेट शैल इन पार्टिकुलर डायरेक्ट इट्स पॉलिसी टुवर्ड्स सेक्यूरिंग that the health and strength of workers, men, women, and the tender age children are not abused, that citizens are not focused on economical necessity to enter adversations unsuited their age or strength. Other important intervention कौन अछि देखिबा ना National Commission for Protection of Child Rights was set up as a statutory body under Commission for Protection of Child Right Act 2500 protect करिवा पई to promote and defend the
चाइल्ड राइट्स इन इंडिया सेमते हमर 86 नंबर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट रे एजुकेशन ऑफ ए फंडामेंटल राइट फॉर चिल्ड्रन इन एज अब 6 रु 14 ईयर लेखा अछि आ प्रोटेक्ट द चाइल्ड राइट इन इंडिया तापई हमर वेरियस एक्ट कार्यकारी करछि गोटे हला जवेनाइल जस्टिस एक्ट 1986 चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एक्ट 1986 द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012 आ बर्थ रजिस्ट्रेशन और आइडेंटिटी आर द चाइल्ड्स फर्स्ट सिविल राइट होचे एडा नेक्स्ट देखिबा राइट टू मेरी कोन The Supreme Court Constitution Bench, while hearing the bench petition seeking recognition of same-sex marriage, questioned whether anyone has fundamental right to marry or there is no right at all. For the right to marry कौन? Article 16 रे of Universal Declaration of Human Rights रो Article 16 रे the right to marry is not expressly recognized either as a fundamental or constitutional right the Indian Constitution. Though marriage is regulated through various statutory enactments, its recognition as a fundamental right has only developed through judicial decision of India's Supreme Court. Such declaration of law is binding on all courts throughout India under Article 141 of the Constitution. तो हमर ए जो विवाह करिवार राइट टा जेहेतु हमर विवाहटा गोटे स्टैट्यूटरी एनाक्टमेंट रे जाउची तो एटा हमर फंडामेंटल राइट रे रिकॉग्नाइज हेनी आकु आमर आर पूरा पावर अछि का ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऊपर अछि त आर डिसीजन नेबा पई तो एटा आर्टिकल 141 रे लिखा अछि आर्टिकल 21 which deals with the right to life and personal liberty is an all encompassing provision which includes with its fold the inherent right to marry someone of his own choice. Inherent right कोन ना right to speak, right to association. नेक्स्ट है इज एन आर्टिकल 21 गारंटेड द राइट ऑफ मैरिज आर्टिकल 21 टा गारंटी दोची कि राइट टू मैरिज रो द फ्रीडम ऑफ चॉइस इन मैरिज इन अकॉर्डेंस विद द लॉ इज एन इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड क्वेश्चंस ऑफ फेथ हैव नो बियरिंग ए पर्सन्स फ्रीडम टू चूज ए लाइफ पार्टनर व्हिच इज द एसेंस ऑफ पर्सनल लिबर्टी. नेक्स्ट है right to hijab. Karnataka government told High Court that there is no restriction on wearing hijab in India with reasonable restrictions subject to institutional discipline and dismissed the charge that deny to wear the handcrafts was violation of Article 15 of the Constitution. For the important fundamental right एथरे कोन कोन include अछि Article 15 include अछि जोटा prohibits discrimination on ground of religion, race, caste, sex, place of birth. Article 19 रो 1 रो सब क्लॉज 1 होची to the freedom of expression of Indian Constitution. सेम आर्टिकल 19 रो 2 says that nothing in sub clause A or clause 1 shall affect the operation of any existing law or prevent the state of making any law in far of such imposes reasonable restrictions on the exercise of right conferred by the said subclause in the interest of sovereignty and integrity of India. So in the article 25 रो 1 कोन कहला and the constitution guarantees the freedom of conscience and the right to freely to profess, practice and propagate religion. Next is the right to silence. Supreme Court has mentioned that all accused have a right to silence and investigators can't force them to speak up or admit guilt as emphasizing that constitution accords every person a right against self incrimination. Supreme Court कोन कहला ना जो माने एक्यूज अछंती तांकर गोटे राइट टू साइलेंस अछि जो माने की इन्वेस्टिगेशन माने बाध्य करि परिबेनी जे गिल्ट एडमिट करबा पई. देखिबा ए वर्डिक्ट रो की हाइलाइट कोन ना राइट टू साइलेंस emanates from article 20 रो 3 of the Indian Constitution. Article 20 रो 3 रे सब क्लॉज 3 रे right to silence कथा लिखाई छी which states that no one can compelled to be a witness against himself. निज विरुद्ध रे निज विटनेस के मध्य हे परिबोनी. The provision gives an accused the right against self incrimination, a fundamental canon of law. Under criminal law jurisprudence, it considered the duty of
prosecution to prove person guilty beyond reasonable doubt. Until proven otherwise, the accused remains innocent. देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजनल कौन अच्छी आर्टिकल 20 ग्रांट कला प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्ररी एंड एक्सेसिव पनिशमेंट एन accused person whereas citizen or foreigner or legal person like company or corporation it contains three provisions. It contains provisions related no ex post fact law, no double jeopardy, no self incrimination. एक्सपोस्ट फैक्ट माने कौन ना सी जेते बेले क्राइम करथिबो सेते बेले जो लॉ अछि से लॉ अनुसार से दंड पाइबो ये हला एक्सपोस्ट फैक्टो लॉ. नो डबल जियोपार्डी कौन ना गोटे लोक दी थर कोनोसी क्राइम पई से दंड पाइबोनी से हला डबल जियोपार्डी. सेल्फ इनक्रिमिनेशन नो पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू बी ए विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ निज पई निजे के मध्य विटनेस हे परिबोनी. The protection against self-incrimination extends both oral evidence or documentary evidence. However, it does not extend into compulsory production of material object, compulsion of give thumb impression, specimen signature, blood specimen, and compulsory exhibition of the body. Further, it extends only criminal proceedings and not civil proceedings which are not criminal in nature. Next is right to be forgotten. The center has told Delhi High Court that the right to be forgotten is involving which was held in the Supreme Court's landmark judgment 2017 is a facet of right to privacy. The right to forgotten, also known as the right to erasure, was established in European Union in 2014. In India, Personal Data Protection Bill 2019 provide for mechanism to implement this concept through its not absolute right. In 2017, a 9-judge constitutional bench headed by Chief Justice J.S. Kehra ruled that the right to privacy is an intrinsic part of right to life and personal liberty under Article 21 and entire Part 3 of the Constitution. बर्तमान देखिए राइट टू फॉरगॉटन कौन इट इज ए राइट टू हैव पब्लिकली अवेलेबल पर्सनल इंफॉर्मेशन रिमूव्ड फ्रॉम एन इंटरनेट सर्च डेटाबेस वेबसाइट and any other public platform once the personal information is questioned is no longer necessary to relevant. The RTBF gained importance after the 2014 decision of Court Justice of European Union in the Google Spain case. In Indian context, Supreme Court in Puttuswamy versus Union of India 2017 noted that the RTBF was a part of a broader right of privacy. RTBF emerges from right to privacy under Article 21 and partly from the right to dignity under Article 14. What is right to privacy? Na Puttuswamy Union case of 2017 रे कहा गला right to privacy was declared as a fundamental right by the Supreme Court. Next topic है right of persons with disability. The Accessible India campaign was launched for making government buildings, public transport and website accessible for persons with disability. First the number देखिबा हमर disability person केते अछंती. As per census 2011 of India, out of total population of 121 crore, about 2.68 crore persons are disabilities. Our total population rate is 2.21%. For the way PWD मान ପାଇଁ constitutional provision कौन अछि Article 41 of DPSP states that states shall make effective provisions for securing right to work, education and public assistance, causes of unemployment, old age, sickness, disability with the limits of its economic capacity and development. The subject of relief of the disabled and unemployable is specified in state list of 7th schedule of the Constitution. Legislative backing for disability of India. Right to Person Disability Act 2016 कहला the act replace कला person with disabilities opportunities protection right of 1995 को replace कला.
हमर पीडब्ल्यूडी मान पे इंडिया रे कोन कोन प्रोग्राम इनिशिएटिव हेची ना एसेसिबल इंडिया कैंपेन इनिशिएटिव होची जोटा क्रिएशन ऑफ एसेसिबल एनवायरनमेंट फॉर पीडब्ल्यूडी नेशनल फेलोशिप फॉर स्टूडेंट्स विथ डिसेबिलिटी प्रोग्राम चलुची दीन दयाल डिसेबल रिहैबिलिटेशन स्कीम अछि असिस्टेंस टू डिसेबल पर्सन फॉर परचेज फिटिंग एड्स टू अप्लायंसेस अछि। नेक्स्ट देखिए राइट टू नेचर मद्रास हाई कोर्ट रिसेंटली ऑर्डर कला डिक्लेयर कला जे मदर नेचर ए लिविंग बीइंग with all compensating rights duties and liabilities of living persons तो अन्य पर्सन परी मदर नेचर को मध्य से लिविंग बीइंग भाव रे कोर्ट डिक्लेयर करछि। भर देखिए रूलिंग कोन अछि मद्रास हाई कोर्ट इन्वोक्ड द पेरेंट्स पार्टी जुडिशन and declared mother nature as a living being having the status of legal entity. Justice S. Srimathi observed that court is hereby declaring mother nature a living being having the status of legal person with all corresponding rights, duties and liabilities of a living person in order to preserve and conserve it. The court observed that mother nature was accorded the right akin to fundamental rights, legal right, constitutional right, its survival, safety, sustain and resources in order to maintain its status and also promote the health and well-being. तो कोर्ट कौन कहला मदर नेचर होची एज ए ह्यूमन बीइंग आ ह्यूमन बीइंग परी से सब प्रकार रो जते सब राइट अछि ह्यूमन बीइंग रो से मध्य तो सेतिक नै परिबो। बर्तमान देखिए पेरेंट पैट्रिज जुडिशिएशन कोन पेरेंट पैट्रिज इज ए लैटिन वर्ड जार अर्थ होची पेरेंट ऑफ पीपल। Under parent patronage, a state or court has patent and protective role over the citizens or other subject its jurisdiction. The doctrine of parent patronage is a doctrine under which state has third party standing to bring a lawsuit on behalf of citizen when the suit implications states quasi sovereign interests and well-being of citizens. 2017 रे उत्तराखंड हाई कोर्ट रो जजमेंट कोन आस्थिला ना उत्तराखंड हाई कोर्ट ग्रांटेड लीगल राइट्स to heavily polluted Yamuna and Ganga river in 2017. The court went to the declare all the glacier including Gangotri, Yamunotri, rivers, streams, rivulets, lakes, air, meadows, dales, jungles, forests, wetland, grassland, spring and waterfalls as living entity. Other country रो कोन कोन सिमिलर जजमेंट अछि देखिबा इक्वेडर रो जजमेंट अछि द साउथ अमेरिकन कंट्री बिकम द फर्स्ट कंट्री टू द वर्ल्ड इन 2008 टू रेटिफाई ए constitutional amendment including nature right तो nature right ऊपर फर्स्ट constitutional amendment 2008 रे आस्थिला इक्वेडर आंथिला सेंति 2017 मसिया रे न्यूजीलैंड रे आस्थिला न्यूजीलैंड एंड इट्स नेटिव Maori have recognized natural ecosystem as living being सेंति कोलंबिया citing the precedents in New Zealand constitutional court of Colombia granted legal right to Atro river near the Panama border सेंति ऑस्ट्रेलिया यूएस Bangladesh are also some other countries that have acknowledged the legal right of various natural ecosystem. Bangladesh in fact went a step ahead and declared all the rivers in the country to be alive and entitled to legal right. Next is the right to vote kono. Supreme Court described as paradoxical the fact that right to vote has not been recognized as a fundamental right of India despite democracy being an essential fact of the constitution. Bhimrao, Baswantrao Patil versus Madan Mohan Rao case and others reda kwagala. Tar key highlight kono the right to vote based on an informed choice is a crucial component of the essence of the democracy. The right is precious and was the result of long and arduous fight for freedom for Swaraj, but the citizen has an inalienable right to exercise here on his right to franchise. Democracy has been held to be a part of one of the essential feature of the constitution. Yet somewhat paradoxically, the right to vote has not been recognized as a fundamental right yet. तो हमारा right to vote वर्तमान fundamental right recognize ହେଇନି. It was termed as a mere a statutory right. तो एटा हमारा exam पे important रहइबो. Right to vote is a statutory right and not a fundamental right. Right to vote in India देखियो इंडिया रे कोन अछि right to vote विषय रे ना Indian constitution granted the right to vote to all its citizens of sound mind above age of 18
irrespective of individual's caste, religion, social or economic status. The right is universally granted to all Indians with a few exceptions. The right to vote in Constitution of India is guaranteed under Article 326. तो इंडिया आर्टिकल रो 326 रे एटा लेखा अछि. It is actually a constitutional right, not a फंडामेंटल राइट. तो इंडिया रे राइट टू भोट होची गोटे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जा विषय रे कि हमर आर्टिकल 326 रे वर्णना अछि आउटा गोटे फंडामेंटल राइट नाही. द फंडामेंटल राइट्स आर एप्लीकेबल टू एवरीवन while constitutional rights are applicable on certain grounds. देखिए हमर डेमोक्रेसी रो इंपोर्टेंट फीचर कोन कोन अछि. फ्री फेयर एंड फ्रीक्वेंट इलेक्शन, representation of minorities, rules with the constitutional law, freedom of speech, expression and choice, federal rights, council responsibility, right to education, right to form association and union, same law for all, or no control on judiciary. Next asila expansion of Article 19 ambit विषय. Supreme Court has supported a case on questions of whether a fundamental right under Article 19 and 21 of Constitution of India be claimed other than against the state or its instrumentalities. देखिए जजमेंट कौन आसला. कोर्ट रूल्ड दैट citizen can seek enforcement of fundamental rights to freedom of speech not just against the state but extend the ground for seeking these rights against other citizens. As said under Article 41 majority ruled by constitutional bench, fundamental right under 19 and 21 can be enforced even against persons other than the state or its instrumentalities. In case of heard in view that the right of free speech and expression granted under the 19(1)(a) can't be curbed by any additional grounds other than those already laid down in Article 19(2). नेक्स्ट देखो हमर डीपीएसपी रे हमर कोन कोन न्यूज़ थिला करंट रे. कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ ईडब्ल्यूएस कोटा विषय रे आसला ना. सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रिसेंटली रूल्ड दैट 10% reservation for economical bifurcation EWS is a constitutional and does not violate the basic structure of Constitution of India. The reservation is mentioned in Article 46 of Part 4 of the Constitution of India which contains the DPSP. तो सुप्रीम कोर्ट रिसेंटली कौन कहला ना हमर 10% जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन रो रिजर्वेशन अछि ताकू डज नॉट सी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को वायोलेट करनी बोली कहला और सेटा आगु मेंशन अछि हमर आर्टिकल 46 नंबर रे पार्ट 4 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज डीपीएसपी. डीपीएसपी कौन देखिबा. डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर सम आइडियल्स set for Indian society and it is emphasized from time to time that is the duty of India and each of the states to apply these guidelines and principles while making law. DPSP is a comprehensive social, economical and political set of principles for modern welfare states. Their nature hochi these principles unlike fundamental rights are non-binding and unforeseeable in nature. It means the violation of these principles can't be contested in any कोर्ट. तो ये होची कोन बाइंडिंग नाही एटा आ आर वायोलेशन फल रे हम कोनोसी कोर्ट रो द्वारस्थ हेई परिबानी. दिस इंपोजेस ए मोरल ऑब्लिगेशन ऑन द स्टेट दैट द गवर्नमेंट शैल ट्राई टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ पीपल एंड सोशल जस्टिस. डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट रो केस रे कोन कोन केस एसोसिएटेड अछि ना. चंपकराम दोराई रजन विस स्टेट ऑफ मद्रास, गोलोकनाथ विस स्टेट ऑफ पंजाब, केशवानंद भारती स्टेट ऑफ केरला. ए तीनटा केस आ सहित एसोसिएटेड अछि. और आर्टिकल कथा जो देखिबा डीपीएसपी रे आर्टिकल होची आर्टिकल 36 रु 51 मध्ये रे एटा को लेखा अछि जार सोर्स होची हमर डीपीएसपी आसी कोड ना इरिश कॉन्स्टिट्यूशन रो आइलैंड रो कॉन्स्टिट्यूशन रो को बोरो करा जायछि. क्लैरिफिकेशन ऑफ डीपीएसपी देखिबा. डीपीएसपी आर जनरली डिवाइडेड 3 कैटेगरीज सच एज सोशलिस्ट प्रिंसिपल, गांधीयन प्रिंसिपल और लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल. हमर सोशलिस्ट प्रिंसिपल रे आर्टिकल 38 रु 47 पर्यंत हमर सोशलिस्ट प्रिंसिपल जाउची. द डीपीएसपी talks about bringing socialistic value to the society and provide several kinds of facilities to the people. सेमने हमर गांधीयन प्रिंसिपल केते केते आर्टिकल 40 टू 48 जाउची एक्सेप्ट आर्टिकल 44 नंबर. तो आर्टिकल 44 हमर गांधीयन प्रिंसिपल रो अंतर्गत नाही. लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी 44 रु 51 जाय जाउची
As the principles falls under this category, one of the most discussed topic of Uniform Civil Code falls under this category, that is Article 44. बर्तमान देखिए यूनिफॉर्म सिविल कोड कौन. What is Uniform Civil Code? UCC refer to that part of law that deals with the family affairs of an individual and denotes uniform law for all citizens irrespective of his or religion, caste or tribe. The common area covered by civil code includes personal status, right related to the acquisition of administrative property, marriage, divorce and adoption. हमर कॉन्स्टिट्यूशन रे यूसीसी कथा कोड लिखा है ना हमर पार्ट 4 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज डीपीएसपी रे लिखा है आर्टिकल नंबर 36 रु 51 मध्य जोटा डीपीएसपी अछि तार आर्टिकल 44 रे हमर यूनिफॉर्म सिविल कोड कथा वर्णना करा जाय छि. अकॉर्डिंग टू दिस ए यूनिफॉर्म सिविल लॉ शुड बी मेड फॉर ऑल सिटीजन्स ऑफ द कंट्री. इट स्टेट्स दैट states shall endeavor to secure for citizens a uniform civil code throughout the territory of India. बर्तमान देखिए डीपीएसपी रो किसी शॉर्ट पॉइंट देखनेबा. डीपीएसपी which ideal principles while government and citizens can't be encouraged to follow them, they are not mandatory. एडा गवर्नमेंट फॉलो करबा मैंडेटरी नहीं और they are not enforceable by any court of law. Next the who enacts law of Union Civil Code. Parliament is the authorized to make laws on UCC. आकु यूनिफॉर्म सिविल कोड को फास्ट इंप्लीमेंट करछि गोवा. गोवा होछि गोटे ओनली स्टेट जे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को इंप्लीमेंट करछि. नेक्स्ट हला शेड्यूल आ सब्जेक्टिव रे कोन अछि. शेड्यूल आ सब्जेक्टिव कथा देखिबा जोथरे केस्ट सेंसस ऑफ 7th शेड्यूल कथा को गला. सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूज कला टू एंटरटेन ए बेंच टू प्लेस चैलेंजिंग द बिहार गवर्नमेंट्स डिसीजन to conduct the caste survey of the state. Point highlighted कौन करछि ना subject to the survey for the list 1 of 7th schedule of the constitution and only the center has the power to hold the exercise. तो बिहार गवर्नमेंट कौन करथिला डिसीजन नैथिला ना caste survey करबा पई किंतु एडा हमर 7th schedule रे फॉलो करछि जोटा कि सेंटर हाथ रे ही पावर अछि आको एक्सरसाइज करबार. तो सुप्रीम कोर्ट आको कोन कर दैछि रिफ्यूज कर दैछि. हमर 7th शेड्यूल रो तीनटा लिस्ट कथा देखिबा. आर्टिकल 246 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन्स 3 लिस्ट ऑफ 7th शेड्यूल दैट इज यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट. यूनियन लिस्ट कोन? यूनियन लिस्ट कंप्राइजेस दोज सब्जेक्ट्स ऑन व्हिच ओनली द यूनियन पार्लियामेंट में इनैक्ट लॉ. यूनियन लिस्ट रे जहा सब लिखा अछि केवल यूनियन ही केंद्र ही ताको एक्ट इनैक्ट करि परिबो लॉ. अंडर दिस सब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंपोर्टेंस सच एज फॉरेन अफेयर, रेलवे, बैंकिंग, डिफेंस ए सब एथरे इंक्लूड अछि. सेंति स्टेट लिस्ट कथा जब देखिबा it comprises those subjects on which legislature of the state can only makes laws such as public order, police, public health, sanitation, betting, gambling ए सब होची स्टेट लिस्ट रे. concurrent list कोन ना ए लिस्ट रे those subjects on which both union and state have a concurrent power which includes education, population control, family planning, forest, criminal law, सोशल इकोनॉमिक प्लानिंग, इलेक्ट्रिसिटी, मैरिज, डाइवोर्स ए सब जाउछ हमरो कॉन्करेंट लिस्ट रे जो थारे हमरो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट दी जन जाको इनैक्ट करि परिबे लॉ. व्हाट इज caste census? caste census कोन? इट मींस इंक्लूजन ऑफ caste वाइज टेबुलेशन ऑफ इंडिया's population in the census exercise. census exercise is a decennial count of the Indian population. From 1951 to 2011 every census published the population of the scheduled caste and scheduled tribes along with the gamut of data including religions, languages, socio-economic status etc. However, never counted OBC, the lower and immediate castes which according to the Mandal Commission make up 52% of the country's population. All castes other than scheduled caste and tribe are counted under general category. बर्तमान देखिबा Ladakh's fight for 6th schedule status. In Leh Apex Body and Kargil Democratic Alliance has jointly put forward 4-point agenda to derive against the UT of Ladakh as follows. कौन से agenda? ना statehood for Ladakh, safeguards under 6th schedule of the constitution, formation of public service commission and job representative Ladakh youth, creation of 2 separation parliamentary constitution Leh and Kargil. This alliance between Leh and Kargil is historic given that 2 communities have been
dividing politically and religiously over 6 decades. देखिए 6th schedule कथा 6th schedule of the Indian Constitution consists of provisions for the administration of tribal area of northeastern state of Assam, Meghalaya, Mizoram, Tripura. According to the article 244 of the Constitution रे लिखा अछि passed by the Constituent Assembly in 1949. 6th schedule seeks to safeguard the rights of tribal population through the formation of autonomous district councils. ADC are bodies representing the district to which Constitution has given varying degrees of autonomy with the state legislature. सेमते हमर autonomous district council तैयार करा जायछि. There are autonomous administrative divisions have legislative, judicial and administrative autonomy with the state. ADC have up to 30 members with the term of 5 years. बर्तमान देखिए लद्दाख रो जो डिमांड अछि तार क्रक्स कोन अछि देखिबा. The demand is for the local council that should be empowered with legislative power by bringing them under the 6th schedule article 244 of the constitution. They demanded Bodoland type power arrangement that protects the right of indigenous people and other land with legislative subject that are exclusively to local governments without interference from central law. A similar provision also under article 371A re that is given to other areas such as Nagaland in respect of the religious, social practice, customary law of Nagas. Next है can Ladakh be described as vulnerable community? Ladakh मानक हमर Ladakhis मानक हमें vulnerable community रे describe करिबा कि Ladakh is known as the part of a global Buddhist civilians Islamic heritage that cannot be described as the primitive or vulnerable community. Diverse and rich cultural setting, Ladakh is historically preserved as a composition of region with centuries of multiple central setting. It is an Asian pivot. The people here transverse to diverse cultural boundaries engaged in ideas. Its Buddhist community resembles nothing like the Chokma tribe in the northeast. The Baltis and Purigas Kargil cherish their rich Persian, Shia and Sufi heritages. What is the ground of ask for 6th schedule? 6th schedule हेबा पे कोन ground रहिछि. The demand from the local tribe communities in Ladakh to extend the provision of 6th schedule to the region. This was primarily driven by concerns over protection of tribal right and preservation of the unique central identities and the local communities. तो ये थिला आज हमरो किछि पॉलिटी रो करंट अफेयर रो डिस्कशन. वर्तमान हम आ रिलेटेड जति टॉपिक हम पढले सेथरो को प्रकार क्वेश्चन फ्रेम हे परियो से विषय रे देखिबा. First question है what does the term socialist in the preamble of the Indian Constitution? हमरो preamble रे जो socialist word अछि तार मीनिंग कोन बचाला तार डेफिनेशन कोन. socialist माने हमें कोन पढथिले ना wealth should be shared equally by the society. society रे equally भाबरे संपत्ति रो भाग बंटन को हमें socialist बोली कहबा. Which amendment added the word socialist and secular to the preamble? तो हमरो socialist और secular को amendment रे आस्तिला ना हमरो 42 नंबर amendment 1976 रे एडा आस्तिला. socialist secular को हमरो preamble रे जोड़ा गला. Next, what is not considered part of basic structure of doctrine defined by the Supreme Court? हमरो कोटा हमरो part of basic structure नाही. तो एडी ऑप्शन अछि सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एडा तो अछि इंडिपेंडेंट जुडिशियरी अछि वेलफेयर स्टेट अछि किंतु राइट टू प्रॉपर्टी हमरो आरो पार्ट नाही. हु चैलेंज्ड द केरला गवर्नमेंट्स लैंड रिफॉर्म ऑफ केशवानंद भारती केस. तो आकु के चैलेंज करथिले ना हमर केशवानंद भारती चैलेंज करथिले. व्हाट इज द गिल्टी बाय एसोसिएशन डॉक्ट्रिन? गिल्टी बाय एसोसिएशन डॉक्ट्रिन इज कोन ना गिल्ट डिटरमाइंड बाय मेंबरशिप इन ए बैंड organization. Under which article the civil servant of India hold office during the pleasure of president? तो हमर civil servant माने pleasure of president रे office hold करछन्ती को article under रे ना article 310 रे एटा लिखा जायछि. हमर civil servant माने president pleasure रे office hold करछन्ती और 311 रे लिखा जायछि हमर state civil servant माने governor रो pleasure रे office hold करछन्ती. Next है what are the term secular in the constitution signify? secular रो अर्थ कोन? secular रो अर्थ होला all religions are treated equally.
हाउ डज आर्टिकल 311 प्रोटेक्ट द सिविल सर्वेंट ऑफ इंडिया? आर्टिकल 311 रे कोन लिखा अछि ना इट मैंडेट्स ए फेयर हियरिंग फ्रॉम रिमूवल. What is the relationship between the state and religion as defined by the constitution? ना हमर रिलेशनशिप कोन स्टेट और रिलीजन रो कॉन्स्टिट्यूशन रे कोन डिफाइन हेछि ना स्टेट आर रिलीजन आर कंप्लीटली सेपरेटेड. स्टेट और रिलीजन पूरा डिफरेंटली अलग अलग पूरा पूरी सेपरेट होते. What was the outcome of केशवानंद भारती केस in relation to parliament power? केशवानंद भारती केस रे आउटकम कोन थिला ना पार्लियामेंट can't alter the basic structure of the Indian constitution तारो आउटकम थिला. What is the doctrine of necessity? Doctrine of necessity कोन ना a legal doctrine that justifies administrative actions, restore orders. Which article of the Indian Constitution deals with the power to the president to notify a particular case as SCBC? तो प्रेसिडेंट रो को आर्टिकल रे लिखा जाय जे प्रेसिडेंट नोटिफाई करिवे एससीबीसी केत्र ना आइडा लिखा है आर्टिकल 342 रो ए रे. What is Constitution's 105th Amendment Act 2021? तो 105th Amendment Act रे कोन कोआ गला restore and authority of state governments identity of OBCs. Which act included provisions for saving of laws providing for the acquisition of estate? The first Amendment Act 1951 रे. Which community was included in the 7th tribe of the छत्तीसगढ़ियन 5th Amendment Bill 2002? तो एथरे हमर कोन इंक्लूड अछि धनुआर अछि इंक्लूड. What is the term of nemo judex in Quajasua refer to? आर अर्थ होला कोन ना लीगल मैक्सिमा that no one should be a judge their own case. Which article was amended to define the socially and economical backward cases SCBC? SCBC हमर को आर्टिकल रे लिखा अछि ना आर्टिकल 366 रो 26 सी रे लिखा अछि. What power did the Supreme Court give to state government regarding OBC list of 127 Constitution Amendment Bill? तो Supreme Court कौन power देला ना power to directly notify OBC without NCBC's approval. Which medial jurist writing influenced the doctrine of necessity? Doctrine of necessity किए लिखिथिले ना हेनरी डी डैक्ट्रॉन. The Constitution Order 1950 originally aimed to identify which of the following na scheduled tribes. What limits the right to freedom to speech and expression as per the amendment discussed? तार limit होची कोन reasonable restrictions imposed by law. Next है what change did the Constitution Amendment Act 102 2018 introduce? तो एथरे अब 102 नंबर रे कोन इंट्रोड्यूस हेतिला constitutional status of national backward classes बा NCBC रो constitutional status मिलिथिला. Which article deals with the right to life and personal liberty? को आर्टिकल रे लिखा अछि ना एटा आर्टिकल 21 रे लिखा अछि. As for the Indian Constitution, which article prohibits the employment of children in factories? तो एटा हमरो आर्टिकल 24 रे लिखा अछि. What is the primary role of states concerning prison management as mentioned in the text? तो एथरे हमरो prison management विषय कोन लिखा अछि managing and administrative prisons. Which amendment introduced the 10% reservation for economical weaker section? तो EWS पे हमरो को amendment आस्ती 103 नंबर amendment. Which international labor convention sets the minimum age of employment? तो ILO रा हमरो को convention रे लिखा अछि ना convention नंबर 138 रे लिखा अछि. What does article 39 of Indian Constitution emphasizes? Article 39 रे लिखा अछि states duty of protection children. What was abolished under Constitution 1/4 Amendment Act? 104 Amendment Act कौन abolition करा गला ना reservation of Anglo Indian को abolish करा गला. Which committee is associated with the prison reform? Prison reform सहित को committee निम्नलिखित मधुर अछि ना मुल्ला committee सहित associated अछि. What does National Commission for Protecting Child Right aim to? तो आर aim होची protect or promote defend children rights. Which constitutional amendment made educational fundamental right to children aged 6 to 14 year?
तो एटा को अमेंडमेंट रे लिखा अछि ना 86 नंबर अमेंडमेंट रे एटा हला व्हाट इज द आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू आर्टिकल 21 रिलेटेड टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी व्हिच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स द डिस्क्रिमिनेशन ग्राउंड ना आर्टिकल 15 रे लिखा अछि व्हाट इज फंडामेंटल राइट डज द राइट ऑफ साइलेंस रिलेटेड टू राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन the right to be forgotten involves the first part of the which right na right to privacy what is the key aspect of article 19(2) of the Indian constitution freedom of expression what act focused on prohibiting the regulation of child labor of India that is answer is child labor prohibition act 1986 what does the right to wear hijab in related to India एथरे कोन अछि डिस्क्रिमिनेशन ऑफ लॉ अलाउ अछि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन सिविल राइट सब गुडा इंक्लूड अछि तो आंसर इज ऑल ऑफ अबव व्हाट वाज द आउटकम ऑफ द पुतुस्वामी ऑफ यूनियन बेस ऑफ इंडिया 2017 तो ए केस आउटकम होछि राइट टू प्राइवेसी वाज डिक्लेयर्ड एज फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21 व्हाट इज द राइट टू बी फॉरगॉटन कोन ना राइट टू हैव पर्सनल इंफॉर्मेशन रिमूव्ड फ्रॉम पब्लिक प्लेटफॉर्म which legislation in India replaced person with disability protection act 1995 आको के रिप्लेस कला ना राइट ऑफ पर्सन डिसेबिलिटी एक्ट 2016 रिप्लेस कला व्हाट वाज द आर्टिकल 41 ऑफ डीपीएसपी रे आर्टिकल 41 रे कोन लिखा अछि सिक्योरिंग राइट टू वर्क एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंट कथा लिखा अछि व्हाट व्हिच कोड डिक्लेयर्ड मदर नेचर ए लिविंग बीइंग विथ कॉरस्पोंडिंग राइट तो एटा हमर मद्रास हाई कोर्ट डिक्लेयर करछि व्हाट इज द पर्पस ऑफ accessible India campaign ro purpose hochi to make government building and services accessible persons with disabilities which of the following replace the conflict highlighted the right to privacy judgment तो एटा हमर privacy of freedom versus freedom of speech what does the term parents paternity related to that is it is related to government's role as caretaker house unable to care themselves which of the following country was the first recognized nature to right constitutionality तो एटा फर्स्ट इक्वेडर को करथिला in which year did the supreme court rule the right to privacy is intrinsic right of life एटा हमर 2017 रे अनाउंस हेछि तो फ्रेंड्स ये थिला हमर ओपीएससी रो क्विक रिवीजन रो पार्ट 1 आज हम पॉलिटी डिस्कशन गले आसना काली मु पुनी हम आ को टॉपिक को नै के आसीबी थैंक यू फॉर वाचिंग प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल स्टडी विथ गोपाल।